में मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं तो सो रहा था, मैंने कहा कहीं वाकई ये बात सही ना हो, लेकिन फिर मैंने कहा भाई पाकिस्तानी फौज खड़ी है, इतनी सारी से इंडिया को दुनिया दिलाने देंगे। उसके बाद कुछ लोगों ने पूछा कि पता चला कि बंकर में छुप गए शहबाज शरीफ साहब जाके, और पता नहीं ऊपर बड़ी हैवी शेलिंग हो रही है प्राइम मिनिस्टर हाउस। ये वो तमाम झूठ थे जो हिंदुस्तान का मीडिया कल रात से बोल रहा है, जिसके अंदर कराची पे भी हमला हो गया, लाहौर पे भी हमला हो गया, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस पे भी हमला हो गया, और ड्रोन पता नहीं कहाँ चला गया। कुछ झूठ उनके जो है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ये वॉर के अंदर जितना झूठ बोल रहे हैं ये उससे कम नहीं है जितना झूठ ये इस वक्त बोल रहे हैं कल रात से, जब से इनका राफेल त्यारा गिरा है। वो त्यारा क्या गिरा, मोराल का इनका गिरा, इनका स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म भी गिर गया। जो मशहूर तरीन झूठ इन्होंने कल से बोलने शुरू किए इंडियन नेशनल चैनल के ऊपर, हिंदुस्तान की आर्मी पाकिस्तान में एंटर हो गई, इंडिया की नेवी ने कराची के पोर्ट्स को उड़ा के रख दिया, इंडिया की आर्मी ने जो इस्लामाबाद कैप्चर कर लिया, ये खबर भी चली हुई है। F-16 शॉट डाउन विद मिसाइल्स, पाकिस्तानी पायलट्स को पकड़ लिया गया। अब पाकिस्तानी पायलट कैप्चर्ड बाय आर्मी। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की पूरी फौज की क़यादत को कैप्चर कर लिया। ना लगाए, मैं हैरान हूँ कि अपना मजाक तो उड़ा रहे हैं, नरेंद्र मोदी का मजाक भी उड़ रहा है, सहाफत का मजाक भी उड़ रहा है। आपको इस तरह यकीन नहीं आएगा, आप लग रहे होंगे शायद यार ये इतनी बेहुदा बात किस तरह हो सकती है जो मैं बता रहा हूँ। तो सबूत के साथ पेश खिदमत है। इससे पहले कि आपको आज के मामलात बताएं, हिंदुस्तान का मीडिया पागल कैसे बना रहा है अपनी अवाम को, नॉट लेस देन जिस तरह मोदी पागल बना रहा है अपनी अवाम को वॉर हिस्टेरिया में इन्वॉल्व करके। इंडियन फौज पाकिस्तान में दाखिल और मुबारकबाद दे रहे हैं इंडिया का मीडिया अपनी उनकी स्क्रीन पे, अब हमारी स्क्रीन पे। पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना, इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है, आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों, सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं सो जाओ, लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ। नहीं, पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, 2-3 दिन और रुक जाओ, तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बन रही है। नहीं सोए भाई, नहीं सोए, तुम्हारी चितौनी के बाद नहीं सोए। बच्चों ने भी मैप यहाँ पे रोक दिए हैं कि नया मैप बनाएंगे भाई। जहां जी नहीं साहब, बहुत बहुत वेलकम, और शामी साहब जी। नाच में कपड़े हमने उनके उतारे हैं, तो उतार के अपने उतारे हैं, उन्होंने उतार के हमारे पास खुद अपने उतारे हैं। ये जब वजाहत कर दें कि नंगा नाच कर रहे हैं खुद, तो क्या ये नंगा कपड़े उतार के आए थे या आए हैं खुद? हमारी अफवाज पाकिस्तान ने कपड़े उतार के खुद सर, खुद नंगा कर दिए खुद सर। और वार्म वेलकम हमारे साथ डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब, डॉक्टर सुल्तान रईस साहब और एयर मार्शल रिटायर्ड वाइस आबिद राव साहब मौजूद हैं। एक और मैं दिखा दूं आपको। अच्छा, बड़ा शामी साहब बड़ा सीरियसली उन्होंने इस मैटर को टेकअप किया बाकायदा। हमने मैप नहीं दिखाया जिस तरह उन्होंने मैप दिखाया, लेकिन इस वक्त हम चले गए उसके ऊपर। वेरी गुड। अभी उस AVM Mujeeb and Admiral Nawaz from Pakistan Navy, and after I am done with my part, then AVM Mujeeb will give you briefly the air picture, and then we will take your question and answers. I'll give you first a rundown of briefly our understanding of the Pahalgam incident. If you see that the location of the site, that the Pahalgam, it is from the tip of the Badori Bulge. The crore distance is 108 kilometers and the ground distance is more than 200 kilometers. This is in context to the allegation that it was the terrorists, the people who were the perpetrators, they came across from the Pakistani side. So I just want to tell you that how deep inside the illegally occupied in Jammu and Kashmir, this location of the site. If you see the map, the area, it is quite a hilly terrain. If you can show the terrain and open this slide. So if you see this, it's quite a hilly terrain, and the place where it happened, it's about 5.3 kilometers from the roadhead, another 1 to 2 kilometers from the police station,
and this is either jeepable or on horseback that the people reach over there. So if you go to the next slide, you will see the first investigation report. It says that the incident culminated at about 14:20 hours, and the FIR has been filed at 14:30 hours. So after the incident finished, within 10 minutes, the police was there. It went there, it investigated, it went back, and then it filed the first investigation report. And the distance of travel is, one side is around about 30 minutes. So I don't think that it's humanly possible to do that. And if you see the contents of the FIR, the relevant part, we have highlighted it for you, it says that the people, the handlers were across the border. So they, within this 10 minutes, they concluded, and they found out in the investigation that whoever did it, from where he was being handled, it says there were indiscriminate firing, and so that is what it's trying to say. So this is all. Once we say that we have not seen any shred of evidence that how this evidence has been produced. So in this evidence there are so many holes and leaks that there is a lot of red flags and questions. That how within 10 minutes they were able to find that. You will see that within at 3 o'clock, around about 3 o'clock, 3:05, the social media handles in India started saying that it was the Pakistan attacked Pahalgam. So they were absolutely sure that what happened. Where is that evidence? We are till now today saying that okay, you knew at 3 o'clock that Pakistan attacked Pahalgam. Where is it? From where it's coming? Their TV channels started saying it. Please run this please run this clip of the TV channel. There are reports coming in of 4 tourists who have been targeted. They've been attacked by the terrorists in Pahalgam. Well, telltale signs of Pakistan's involvement is now emerging behind the Pahalgam terror attack. So this confirmation is clear now that there were Pakistani terrorists. Pakistan is not willing to digest that so much improvement has taken place in Jammu and Kashmir. So the point is to be noted is that at 3:30, it was Pakistan everywhere. Why it's important to say it again and again and even today is that this is the basis, the very flimsy basis, the very concocted basis on which today we are seeing the military situation that is going on right now. On the basis of which the innocent children, women, elderly and civilians are being killed. This is that basis. Now, if you go ahead, what is the people of the valley in Kashmir, what is the people all across India saying about it? What was they saying and what are they still saying of that incident, of those accusations, on the basis of which we are sitting over here, and from the night of the 6th, 7th May, you are seeing this blatant aggression that has taken place from India. What is the reality of that? Please run the first clip. 10 लाख से ज्यादा यहाँ पर आर्मी है. अगर यहाँ पर पोस्ट कोई शेयर करेगा ना, उसको रात में ही उठा लेंगे. अगर कोई पोस्ट गलत करेगा कोई शेयर, अगर यहाँ पर इतना फौज है, वो क्या करे? वो जख मारे हैं. वहाँ पर 200 बंदे थे, तब वहाँ पर क्यों नहीं आर्मी थी? क्यों नहीं थी? वो कहाँ गई? पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए. पहलगाम की जिम्मेदारी, 27 लोगों की जान गई. वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्योर नहीं है, ये सरकार का फेल्योर नहीं है. ये प्लान करके मत करो. सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा Son of a victim. हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है. इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है. चक्के नाकों पर आप हर जगह आपको मिलिट्री दिखेगी, पुलिस दिखेगी, सीआरपीएफ दिखेगी. किस लिए? बॉर्डर पे हैं तो कहां से आए? जहां तक पहुंचे हैं तो वापस कहां गए? इस तरीके से किया गया रिटेलिएशन नहीं हो सकता है. अगर 7 लाख से 12 लाख के आसपास यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस है, उसके बावजूद इनको ये पता नहीं इंटेलिजेंस फेलियर. 3 टायर सिक्योरिटी रहते हुए भी एक ऐसा लैब्स हुआ और ये सिक्योरिटी लैब्स है. What happened to our intelligence? Have we failed somewhere? And if we have, why have we
इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी है जमा कश्मीर में, एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौज है, वो कहाँ है? वहाँ पे गाड़ी नहीं जा रही है, पैदल इंसान जा रहा है। सिक्योरिटी इतनी है कि वहाँ से कहाँ से टेररिस्ट कहाँ से आ गए? वहाँ कहीं ना कहीं इनकी एजेंसी अटैक करवाती है। Now, listen to what the other people all across India are saying. ये पुलवामा 2 है। पुलवामा 1 में कोई उत्तर नहीं मिला देशवासियों। ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। पूरी देश की जनता, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी देश की जनता, देखिए काफी लोगों को ये नहीं पता है कि पहलगांव कहाँ है, चंदनवाड़ी कहाँ है, विष्णु टाप कहाँ है, गणेश टाप कहाँ है, शेषनाग कहाँ है, अमरनाथ क्या है। आज 3 दिन हो गए हैं, अभी तक एक भी इस्तीफा क्यों नहीं आया, या कोई भी किसी ने भी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लिया है? आप क्या सरकार और क्या डिफेंस और क्या आप होम मिनिस्ट्री चला रहे हैं? आपसे अभी तक वो आतंकवादी पकड़े तक नहीं गए हैं। बेवकूफ नहीं है हम लोगों को सब समझ आता है। कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गए। ये घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा हो। क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहाँ पे घटना करके आबाद होंगे? The wife of the naval officer killed in this attack. That for 90 minutes he kept on bleeding and no one was there. हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए। कश्मीर में सिचुएशन स्टेबल नहीं है, कश्मीर में कुछ भी ठीक नहीं है। जो आप चुप देख रहे हो ना, इसका मतलब ये चुप नहीं है, ये किसी आने वाली चीज की आहट होने वाली है। जैसे एक साइलेंस होता है ना कुछ होने से पहले, कश्मीर अभी उसी ट्रिगर पर है। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं, और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर दी। देश के गृह मंत्री ने क्यों नहीं लिखा, और प्रधानमंत्री को हमले के तुरंत बाद आतंकियों को धमकाने के लिए बिहार में रैली करने की क्या जरूरत पड़ गई? जम्मू कश्मीर के पहलगाम के निकट मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बैसल घाटी में आतंकी हमला हुआ। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की पंक्तियां हैं, सरहद पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। Why it's important that we recall this? It's because of these questions, these very valid questions, this criticism that is coming from inside India to divert attention from that, because they don't have any answers to this. What they do? They attack Pakistan, so that the whole attention of their domestic public, all this criticism is diverted to something else. And as we will see, as you must have seen, that before doing that, they gagged the complete media. They banned the thousands of Twitter handles and social media sites. They banned all sort of digital media that is operating inside Pakistan, so that their public only listens to what they are telling them. You don't have any answers to why it happened, how it happened, who did it. You don't have any evidence. So what you do, you open up the military front. Is it the first time that India is doing this? That creating or using a terror incident for political purpose, for domestic political objectives? No, there is a history to it. Let's recall this incident that happened in 2000, quarter of a century ago, in Chatti Singhpura. Listen to the general officer commanding there at that time. Listen to a general of the Indian Army telling you the truth of that incident. Enemy was guilty there, Captain Turk. They were misused. रात ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, यूनिफॉर्म ਚਾਉਣਾ, ਰਫੜਾ ਟੰਗ ਦੇਣੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। CID पूरी ਕੱਢ ਲਈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦੇ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਚੌਧ, ਮੇਲਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਿਆ। And then one night they came, ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ के लिए निकलाओ बाहर आओ, सारे आओ, मेल सारे बाहर आ जाओ, वो लाइन अप कर लेते थे।
पहले उदा ही करते रहे फ्रेंडली लाइन अप उन्होंने कॉन्फिडेंस देता फिर फैसला किया अद्धी एक दिन आ गए 10 बजे रात निकलो बाहर गुरुद्वारे को लाइन अप करे ताकि भज जान पिंड छड़ के तो कोई आर्मी वालों कोई एक्शन या तो कोई We gave the full report. We said army was involved. Clinton kicked up a row. Due to me, a lot of lives have been lost. I want to know exactly what happened. The Oath of Human Rights Organization, United Nations sent. And we sent them the report. क्या हुआ? They knew. Americans knew. तो the पीछे कोई उस killing के पीछे political reasons भी थे? No. Only this. They exposed the BJP government. And BJP government wanted to tell Clinton J&K की हो रहा पाकिस्तान दे बटला प्रोपेगेंडा करना सी ये देखो पाकिस्तान की कर रहा है पाकिस्तान ने साढ़े सिख लाइन अप करके मारते So basically BJP planted this to impress Clinton to help India against Pakistan तुसी मान नहीं सकते वो तो बाद जब ये रौला पिया फिर अडवाणी ने फिर ऑर्डर दिता कि देखो जल्दी से कुछ करो जिससे कन्विंस हो जाए भाई इन्होंने किया था ये वो पकड़ लो किसी को इन्होंने 5 इनोसेंट बंदे कश्मीरी पहाड़ के ऊपर जाके मारते जी दे वर इनोसेंट बॉयज So once we question what they are saying now, there is a history to it of killing innocent people for their political objectives, pinning blame on Pakistan, covering it up by further killing innocent Kashmiris and Muslims and posing them as terrorists. Go to the next slide and listen to the truth of Pulwama by the governor of Kashmir at that time, the Indian Kashmir at that time. पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे ये करेंगे वो करेंगे उसको इलेक्शन के लिए यूज़ करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन एग्जैक्टली So what's happening now? Is it something different? It's the same playbook. That is why we say that this drama of this mantra of cross-border terrorism from Pakistan, of these jihadi organizations supported by Pakistan, these concocted allegations, and then basis of that, you start going into military posturing and military action. This must stop now. And that is why the government of Pakistan very rightly said that if you have any evidence, put it front to an independent, neutral commission and let them examine it. Nobody gives you the authority to become the judge, jury and executioner. And that's what exactly India is doing right now. What Indians started doing, because this is also a linkage of that hubristic, that aggressive mindset that you see right now at play in Indo-Pakistan, in South Asia and in the world right now by the India. What they started doing it, that they started crushing the people of Kashmir and the Muslims and the minorities over there. This is, just listen to the Kashmiris, what is happening to them. ये जो इंडिया वाले हैं मैं कहती हूँ इनको तो इनके सीनों में दिल है ही नहीं ना इनके सीनों में अगर दिल होता ना तो ये कुछ ना करते इतना अरसा उन्होंने कैद में रख के तो आखिर में जब उनका फैसला होना था तो उन्होंने उनको एनकाउंटर कर दिया और इन्होंने हमें उनकी ना डेड बॉडी दी पहला बेटा What we are telling you over here, that this is what they do. Kashmiris, people who inadvertently cross line of control, on different pretexts, they hold these Pakistanis, these Kashmiris, in different prisons, in locations, and then torture them, then kill them, and then pose them as infiltrators, as terrorists. This is the story of a minor boy who crossed into Kashmir years ago. They kept him in jail,
then killed him in a fake encounter. And this is the family of that child who is telling the story. This is how they frame and concoct evidence for these so-called acts. इधर ही बाहर ही खेलता था। माँ ने बहुत मुश्किल दिन गुजारे उनकी आँख नजर भी चली गई थी रो रो के। बस जब कोई इधर कोई आता था उनको मिलने के लिए कहते ज़िया मुस्तफ़ा की कोई खबर है नहीं है। हम यही कहते थे कि वो आएगा इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। कहती थी कि मैं देख के मर जाऊँ तो फिर कोई अफसोस नहीं है। मेरी वालिदा मोहतरमा इसके इंतज़ार में वो वफ़ात पा गई और इसी तरह से हमारे बड़े भाई 2 बड़े भाई फौत हुए उसके इंतज़ार में। हमारा वो प्यारा बच्चा वो इस तरह से मार दिया जेल से बाहर निकाल के ऐसे फर्जी नाम दे के कि उसको पता नहीं कौन सी जंगलात का पता था। उसको क्या पता था ज़ालिमो तुम्हारे वो जेल में है। जेल से कैसे कोई बंदा रब्ता कर सकता है। This boy in October 2013 this minor was taken into Indian custody and they killed him in October 21 on the charges of being a terrorist. What they did after Pahalgam, opened up the same playbook. So this is on 24th of April, 2 days after Pahalgam, we saw that the Indian media reported a fake encounter that 2 terrorists from the Pakistani side, they were infiltrating and they were killed. Look at their bodies, these so-called terrorists. They are 2 citizens more than 50 years old from a divided village, 2 Pakistani citizens from the Pakistani side of Kashmir. Clean shoes, shining moccasins, pistol and a planted gun and a planted pistol. And these are the terrorists that are going across in an area which is a border which is infested with military forces all over. And once the media went to their village and to ask the truth, listen to what the villagers tell about it. आसानियाँ हो गया है ये 2 हमारे बुजुर्ग भाई ये सदियों से यहाँ रह रहे हैं इनका बाप दादा यहाँ का रहने वाला है आलूसी के करीब ये गांव है कहीं मालूम बहुत गुम हो जाता है आलूसी के करीब उनको ढूंढने के लिए गए इंडिया आर्मी ने शहीद कर दिए वो मार के कहते हैं कि ये दहशतगर्द है और दहशतगर्द ये नहीं है हमारे 2 भाई इंडियन आर्मी ने इनको शहीद कर दिया है वो गाँव के ज़ईफ़ुल उम्र थे तकरीबन उनकी 50-60 साल उम्र थी और उन्होंने रिपोर्ट में डाल दिया कि ये पाकिस्तान के दहशतगर्द थे दहशतगर्द नहीं थे वो ज़ईफ़ुल उम्र थे एक का नाम मलिक फारूक और दूसरे का नाम मोहम्मद नंबरदार जो कोई दहशतगर्दी में नहीं पाए जाते हैं कि अरसा दराज से यहाँ रहते हैं इंडियन आर्मी ने फायर करके उनको हला कर दिया मेरे 2 भाई अपने माल मवेशी ढूंढने के लिए एलओसी लाइन के करीब गए तो इंडियन आर्मी वालों ने फायर करके दोनों को शहीद कर दिया The CNN team went to this village a few days ago and they went to the same village and what he found about the reality. Elderly children and women are incredibly scared. He says, we want to take our livestock out to pasture, but the Indians are right there in front of us, and we're very concerned. Their fears may be well-founded. This 17-year-old says Indian troops killed his father, Malik Farouk. He had gone to the line of control to chase our cattle, he says. The Indians shot him and accused him of being a terrorist. He is not. He is a good man. The day after the massacre in Indian-administered Kashmir, the Indian government announced it had foiled a terror plot, killing 2 Pakistanis. Malik's brother denies the allegations too, says he was just a herder like me, believes India wants their land, before breaking down in tears. It's okay. It's okay. India's done a great cruelty to us, he says. If they want me to leave, put a bullet in my head. That's the only way I'll go. What I want to bring to your notice is this: you as independent journalists, please go and find the facts. These are the facts. You pick innocent people, you murder them, the army sits and tells them these are terrorists. They do it on daily basis. That are these the terrorists that the Pakistan is sending across? They are innocent people. And on basis of that, you ratchet up concocted lies, a story, and you put it out in the media, in international media. You blame Pakistan. You don't provide any evidence.
and then you say we will attack. This is exactly what they have done. Okay, that this terror plot was made by this and this. These are the mosques, and you attack mosques, the places of worship, right under the eyes of the international community. The fact of the matter is, yes, there is terrorism. There is terrorism that's happening in Pakistan on daily basis. And who is sponsoring it? It's India. I'll give you the facts of this Indian sponsored and abetted terrorism in Pakistan. First, listen to what their leaders, their political and military leaders themselves say. What the evidence which is available publicly, what it tells us. Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. प्रधानमंत्री जी का लाल किले से बयान अपने आप में पहला है और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बयान को सुनकर। इस फोन में भुट्टी, मरी, मेंगल, कौन से सरदार का नंबर चाहिए मुझे बोलो, मैं दूंगा बलोचिस्तान में। अगर हम पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स हैं उनके अंदर थोड़ा बढ़ावा देते हैं, तेल फेंकते हैं, हमें वो करना चाहिए। उन्होंने बलूची को दबा के और गुलाम बना के रखे, तो उनको मुक्त करना। The aims and the targets of Kulbhushan Yadav, serving naval officer of India, doing terrorism, supporting terrorism in Pakistan. Kinds of requirements of them are conveyed back to the raw officials. The terrorist leaders who surrendered, they are telling that how India supports them, how India sponsors terrorism in Balochistan. अपनी ऐश वशरत की जिंदगी गुजार रहे थे, आम मासूम बलोचों को मरवा रहे हैं। इस तमाम साजिशों में खासकर इंडिया का हाथ है। मेरा मुलाकात हमसाया मुल्क के इंटेलिजेंस वालों से हुआ। हम आपको सपोर्ट करेंगे रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तकिम होने के लिए। एक महसूस करते बलोच को सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, या मैं समझता हूँ कि इसका नुकसान सिर्फ बलोच कौम का हो रहा है। मेरी नजरें तो हैं इस पे, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। This is open source. This is available to you. Everyone is listening and saying, and they are openly saying and jumping that we are going to do insurrectionist movement inside Balochistan. We will support them. We need to fund them. There are people who they were funded and they are telling yes, we were supported them. They have networks of people who they train them. They supply them weapons. There are terror camps actually inside India who are supporting, who are fueling this terrorism which is going on in Pakistan. This is Aslam Achu, a known terrorist of these Indian-sponsored terrorist groups in Balochistan. He is lying in a bed in India once he got sick. This is the spokesperson of the Baloch Liberation Army. Once the Jafar Express, this horrendous terrorist act happened where innocent civilians were killed in the train. Where was he? He was being taken by the Indian media, and he's glorifying that act of a defunct, internationally recognized terrorist organization. Listen to him. देखिए जैसे कि बहुत बड़े पैमाने का एक ऑपरेशन है, सैकड़ों यरगमाली है, फिर उसमें फौजी भी है। बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड इसको लीड कर रही है। उसके जो खसूसी दस्ते हैं, स्पेशल जो यूनिट्स है, एसटीओस है, फतेह स्क्वाड, जो महारत रखते हैं इन चीज़ों में, जंगी महारत भी उनके पास बहुत है। फिर इंटेलिजेंस विंग भी उनकी उनको मालूमात वगैरह बर वक्त दे रही है। So who is supporting them? Where is he sitting? Which country's media is glorifying this terrorist act? Now look at this way of this video that once the Jafar Express happened, this is a video that was shot exactly at the time when the train was blown up by the terrorists. Where was this video given? From where it was aired first time on the electronic media? India. Attack took place at around 1 p.m. when the train passed through the Bolan Pass. Big news coming in from Pakistan. So that video
tell you that the Baloch terrorist groups made a video, and who is the one who is hearing it? The Indian media. Who is supporting that and celebrating and glorifying that terrorist act? Indian media. This is the evidence that we put in January of 24, the Foreign Office of Pakistan. We have credible evidence of the links between Indian agents and the assassination of two Pakistani nationals on Pakistani soil. These are killings for hire cases. Indian agents use technology and safe havens on foreign soil to commit assassinations in Pakistan. An Indian agent, Yogesh Kumar, orchestrated the assassination. We have documentary, financial and forensic evidence of the involvement of the two Indian agents who masterminded these assassinations. Are they only involved in Pakistan? No, they are involved elsewhere also. They are involved in Canada also. They are involved elsewhere in the other countries also. You must have heard it again and again. But just to understand that why they are doing this, what they are doing right now, is because they don't want the world to ask these questions. You yourself support terrorism. You yourself mastermind terrorism. You yourself execute transnational killings. And at the same time, without any evidence, you concoct stories, and then on the pretext of those false presumptions, you carry out military aggression against innocent citizens. They are also responsible for transnational killings. Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. This is something we take very seriously. A number of us have raised this directly with the Indian government. If the BJP administration is actively plotting to kill political opponents in the US and Canada, just imagine what's happening in India itself. I think very important point that is said by the Australian leadership over there. Just imagine what they are doing inside in India. Once this Pahalgam incident happened, immediately after that the National Security Council of Pakistan sat down and issued a declaration. What did they say in that declaration? One part of it, it says that the Indian attempts to inject volatility in the environment along Pakistan's eastern border is aimed at distracting Pakistan's counter-terrorism efforts. Because one of the objectives of this incident is to provide space to the terrorists sponsored by India who are operating along in the western part of the country, whether it's Fitna al-Khawarij or the terrorist groups operating in Balochistan. Because the government of Pakistan, its armed forces, security agencies are on daily basis tightening the noose against this Indian sponsored terrorism. So one of the objectives is to distract and divert the security agencies, the armed forces from these counter-terrorist operations. We know it because we have credible intelligence that as this incident happened, in the same time frame, instructions were issued, passed to all the terrorist cells, all the terrorist organizations sponsored and abetted by India to amp their activities in Pakistan, to increase the terrorist acts in Pakistan. And on the night of 25th, 26th April, post Pahalgam, the largest tashkeel of the Fitna al-Khawarij in the history, it attempted to infiltrate across Afghanistan. More than 100. And 71 of them were killed. Because they came in a hurry. Because they were being pushed by the Indian intelligence agencies to go across and do terrorist acts in Pakistan. You can see this engagement and the results of that over here. The largest tashkeel. Now this is again on 25th of April, post Pahalgam, a terrorist was nabbed in the town of Jhelum in Punjab, Pakistan, and from the material, from his forensic of his mobile, a lot of information came out that he was working
on behalf of the military intelligence of India. A terrorist being directly funded, sponsored, trained, and doing terrorist activity inside Pakistan for Indian military intelligence. I'll just show you one or two audios in which he is talking with his Indian military intelligence officials, their officers who are telling him what to do. So he is talking to an Indian Major Sandeep. बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है ना, तो मैं अगर पैसा आपको भेज रहा हूँ इसलिए नहीं भेज रहा हूँ कि मेरा बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। आप कभी डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेंगे, पहली चीज ये आपके लिए भी क्या कहते हैं, मैं एक डायरेक्शन दे भी देंगे 10,000 रुपए यहाँ के मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है कि कितने अमाउंट को डालने से ISI या आपके यहाँ की एजेंसी या आपकी साइबर विंग हो गई, ठीक है ना, या आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गई आपकी, वो उस चीज को मद्देनजर नहीं लेगी। समझ गया? ठीक है ना। जब आप बड़ा ऑपरेशन करेंगे, और मैं लाखों की बात कर रहा हूँ, जब आपको 3-4 लाख रुपए भेजे जाएंगे यहाँ से, तो आप लड़कों में क्या होता है, एक ऑपरेशन करने के बाद वो पागल हो जाते हैं। मैं आप इस तरफ की बात कर रहा हूँ, उनको लगता है जी सामने वाला बंदा पैसा देने के मूड में नहीं है जी, सामने वाला बंदा पैसा देगा बट आपको वो टुकड़े टुकड़े में करके देगा। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं भी कमीशन देता हूँ किसी बंदे को देने के लिए जो वहां पे बैठा हुआ है, जो अपने रिस्क पे आपको भेज रहा है पैसा, उसको भी तो मैं दूंगा ना भाई, मेरा क्राइम तो है नहीं वो, या घर वाला तो मेरा है नहीं, वो भी मेरा दोस्त ही है, मेरा ताना तो मैं दूंगा ही दूंगा ना भाई, उसकी भी तो लेबर लग रही है, तो मेरे को सेफ रखना है, तो मेरे लिए आसानी है कि मैं एक बारी में दे दूं, मेरा काम, मेरे पैसे बच जाएंगे। बट मैं आप लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उसको 2-3-4 हिस्सों में बांट करके आपको देता हूँ, अकाउंट में नहीं, अलग अलग अकाउंट के अंदर। हम फ्यूचर में भी जब आप ऑपरेशन देंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो इस तरीके से जब चलेंगे आप पेशेंटली, तो हम लंबा चलेंगे। देखिए मैं 1-2 दिन के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आने वाले काफी सालों के लिए यहाँ पे हूँ। ये ऑपरेशन के साथ आपका मेरा साथ और काम खत्म हो जाएगा। आप ऐसा करें कि आप भी बोले कि हाँ अभी किसी बंदे। So what is he telling them? He's telling them, I am running, that we, the military intelligence of India, are running a terror network, not here, we are running it from Lahore to Balochistan, all over Pakistan. He's telling him that we are here since years and we are going to be here for years. That's not that I am doing it for one off. You are just one of my many that I am recruiting and I am going to pay. And what's he telling him? He is telling him the intricacies of terror financing. He is a serving major of Indian Army. So who is doing terrorism in Pakistan? This is just one Indian cell. And he is telling them that I can give you millions, I can give you lakhs. Just imagine how much they must be paying to Fitna al-Khawarij, how much they must be paying to the terrorist groups whom they are running in Balochistan. Not millions, billions. This is the reality. We are asking that just give some iota, some fraction of such sort of evidence for what you are telling that this Pahalgam, someone in the Pakistani state was involved in it. You don't have any evidence. The same way, you have no evidence that Pakistan is attacking for last 48 hours at multiple locations inside India. You just concoct stories. I think this time has come to ask the real questions, the better questions. That the Indian government needs to stop living in cinema and theatrics, and they need to come out of fiction. They need to stop creating fiction. This is reality. This is happening. There are there are cells that these people are putting bombs, planting bombs, killing innocent. ਰਾਜਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ 4-5-10 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਕਿ ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਏ ਚੰਗੀ ਪੜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਆਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਏ सही है
आसान है ना पहले ना तो आसान हाँ ये कम थे आसान है So what is he saying? That plant this bomb in a market, target civilians at a place where it makes news. So they want to kill civilians, innocent people. They want to splash news that Pakistan is not safe. We have dozens of such evidence available with us. These horrific stories of how India is sponsoring terrorism inside Pakistan. And what's the net result is? Since January 2024, there have been 3,700 terrorist incidents in Pakistan. Pakistanis have suffered 3,896 casualties. There are 1,314 people who have lost lives, who are Shahid. There are more than 2,500 who have lost their limbs, who are injured, maimed for life. So is the blood of the Pakistanis cheaper? And is this justifiable? Is this all kosher? This is not terrorism? What is this? All being sponsored, abetted, done, controlled, planned by India. And you don't have any evidence for Pahalgam? You cook up a story, this mantra, you listen just, I think yesterday, that yes, there are jihadi organizations because Pakistan has been doing this, because Pakistan has been doing this. That because Pakistan has been doing this, just because that, where is the evidence for that? That Pakistan has history? Which history? Tell us about this incident. We have for each and every incident, we can tell you how the Indian hands were involved. Your leaders are on public display. They are saying that we are going to do terrorism inside Pakistan. We are going to destabilize Pakistan. And please understand this, that Pakistan is the last bulwark state standing against this terrorism. This creeping ideology, this perverted ideology that is coming from our West. If this country of 240 million plus people, if this terrorism, this perverted ideology takes roots over there, just feel the consequences of that for the world. Who is fighting against it on daily basis? We, the people of Pakistan, the armed forces, the security forces. The figures tell themselves, 190 operations per day. Since January 24, more than 77,000 counter-terrorism operations have been done by the state of Pakistan. We are fighting it on daily basis. And India is sponsoring and supporting these terrorists for its very myopic and short-term interest. If this bulwark state, which is fighting against this terrorism, not on only behalf of the people of Pakistan, but for the people of the world, if it gets distracted, which is one of the objectives of the India, what consequences it will have for the region and the world. Also keep this thing in mind. Now on the pretext of action against this Pahalgam incident, their perpetrators, rather than giving credible evidence, what they started an oppression campaign against the Muslims and the Kashmiris in particular. This is what is happening right now in Kashmir. More than 50 houses have been bulldozed and blasted. More than 2,500 innocent Kashmiris have been taken into custody, God knows where. This is happening right now. This is their counter-terrorism operations that is going on. सिक्योरिटी फोर्सेस जब आए उन्होंने हमें सबको निकाला बाहर वो एक बंदा यहाँ से चढ़ा हमारे यहाँ पे जो ये थे मतलब घर का वो स्टोर होता था वो वहीं पे चढ़ा उसने कुछ रखा वहाँ पे बम रखा कुछ वो जो ब्लास्ट उन्होंने किया वो रखा उसने मैंने खुद देखा एक वो मैंने फौजी वर्दी पहनकर उसको मैंने देखा था यहाँ पे जाते हुए तो फिर सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो गया They are beating innocent people on streets. जाए ताकि हम घर सेफली पहुंचे जाए हम अभी स्टूडेंट्स हैं जो चंडीगढ़ में है हमारे साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है हमें बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है बहुत ज़्यादा हम डरे हुए हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये अभी किया जा रहा है कि तुम लोगों ने किया वो किया ये किया जबकि हमारा
तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। हमें इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। ये कश्मीर के लोगों की तरह बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, हमारी कोई भी मदद नहीं की जा रही है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारी हेल्प की जाए। Please zoom out, see the bigger picture. The Indians want you to zoom in and just ask you and on that this is happening, this is happening. This is what's actually happening behind all this dirt that they are doing right now. This is continuing on daily basis. This oppression, what's happening on the streets of India to the Muslims and the minorities. हमने तो काम स्टार्ट कर दिया अपने गाँव में। भाई हम काट लेंगे 200 ले लेंगे तो तुम्हारे काट लेंगे भाई। We will chop whatever Muslim we find. दो कटुए मारे गए, छत्री और अच्छा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है और भारत माता की सौगंध 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदुराज। Dogs and Muslims not allowed. This is happening in India. अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसमें हिंदुओं को देख के मारा गया है। Please understand this hatred, this state-sponsored hatred against the minorities, which is working with the mindset, the hubristic mindset which is behind this military aggression. The problem here is what India is doing, that they are doing two things. They are externalizing their internal problems and they are internalizing their external problems. So oppression of the minorities, extremism and terrorism is an internal problem of India. Rather than addressing that, rather than addressing this oppression, this extremism, this rising Hindutva within India, rather than addressing it, they are this internal problem, they are externalizing it by putting blames on Pakistan and other countries that this terrorism and this extremism is being exported from here. It is not. It is their internal extremism and oppression day in, day out, 24 hours that the minorities, that the Muslims, that the Kashmiris, that the Sikhs and others are facing there. You need to address it at home. Please don't externalize it. And Kashmir, ladies and gentlemen, is an external problem. It is an internationally recognized disputed territory between two countries, with the decision to be made by the people of Kashmir. But you are internalizing it by putting more than 700,000 troops over there, by doing oppression over there, by changing its demography, by changing its status. So this is the main issue that is at hand. You try to put their mouths shut. Listen to this boy. That on 24th April, what he said and then what happened to this journalist. He's a journalist in Kashmir. What happened to him on 25th April? यहाँ पर 7 लाख से लेकर 12 लाख के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो क्या कर रहे थे? पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है, मच्छी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहाँ से? Don't ask Kashmiris on this. Ask the security agencies. कितनी कंपनीज है यहाँ? RR है, SSB है, CRPF है, आर्मी है, BSF है, वो क्या जग मार रहे थे? गवर्नमेंट क्या कर रही थी? मैं उससे सवाल कर रहा हूँ आप सब लोगों के माध्यम से कि क्या कर रहा था गवर्नमेंट? होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, होम मिनिस्टर साहब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ये क्यों हुआ? And next day he has been picked up. God knows where he is. Now listen to this girl. She is a social media influencer. What happened to her? अपहरण कांड 1999, कारगिल युद्ध 1999, संसद पर आतंकी हमला 2001. She is just saying that why all these terror incidents happen in the time when the BJP government is in power. और 2017 गोधरा कांड 2002, पठानकोट आतंकी हमला 2016, उरी आतंकी हमला 2016, पुलवामा आतंकी हमला 2019, पहलगाम आतंकी हमला 2025. पहलगाम हमले के जवाब में
shut down the all digital media that is coming from Pakistan or independent news agencies. You shut down the X